We also have a new background Yes. for Urjita. That's the Chapati background. blanket. Yeah. Chapati blanket. This Yes. is actually very cute. Do you want it? Well, sorry, you can't buy it. It's sold out. Oh, Dude, the timing the of timing of that. was incredible. First internship Yeah. where Hoshang was also there. 3,000 rupees. Yay! We used to get 3,000 rupee cash. I kid you not. The first thought when I got that cash was like, कितने सारे वड़ा पाव खरीदोगे? What is money, bro? Money is just free cash. It is just like monopoly के पैसे हैं, paper है. I saw the wedding planner cry. Okay, and I saw the bride's mother console the wedding planner. Oh, It's wow. okay, beta. We'll figure it out together. And the wedding planner is going, no, it's just the rain. Wow, this is just again and again behind it. Manu discovered a lot of things about. Yeah. ठीक है. He was like, भाई ये तो बहुत ही कंजूस है यार. He's like pastry खाएगी. नहीं मुझे घर चाहिए. Like अरे नहीं भाई खाना. Let's get into your products. Okay, क्या so लेके the आएंगे? first one. Is my venue. Hello. Welcome back to Spendamento. My name is Oshang. This is Govind. That's Antariksh. And With another fuck all camera angle. yes, which Of course. will not put. Don't worry, you'll not see this fuck all angle. But what's not fuck all this time around is this. And new couch. Yeah. And we will have soon more things here, but that new later. But new this. rug, new So rug, we are- and a new guest. New guest on Spendamento 2.0. This new guest is the first person who called me out on my spending the very first time I met her. Give it up for Urjita Wani, everyone. Hello, Oh, hello. energy is very high. Yay. Huh? It's very high today. Hi, hello. Hi, I feel like I have to match up to your Yeah, I energy. did- I- मेरे फेफड़े फट रहे हैं हाँ, अभी इतना जोर से नहीं, मेरा बोलते एनर्जी हुए. खत्म हो गया इसके बाद like, ये this new guest is the new Because to be honest, I'm off some things I used to be on earlier. So I'm not too mellow now. गोविंद लाल हो गया है भाई. गोविंद लाल इससे हो ज्यादा गया है. एनर्जी नहीं हो रहा मेरे से उसके लिए तो खत्म क्योंकि I was matching his energy I was like I can't match that energy I don't know what kind I'm of trying energy something new, dude. I'm इसकी excited. नसें फट रही है गोविंद की. It looks like किसी पे चिल्ला के आया है. ये बहुत हो गया उशाक मैं मेरे को पसीना आने लग गया ऑलरेडी I think I need to बस calm down a normal. little. But I'm too excited because of the new setup and Urjita is No, here. I think because you're off some things. But Yeah. welcome to the podcast, Urjita. Hi, Urjita. Hello. Welcome. Thank We you. also have a new background Yes. for Urjita. That's the Chapati background. blanket. Yeah. Chapati blanket. This Yes. is actually very cute, man. Hey, thank Yeah. you. Very cute. I mean, Thank you. this serves a technical purpose we were trying to solve, but it adds a lot. Yeah. Reflection, glass Hey, का reflection ना Do you आए. want it? Well, sorry, you can't buy it. It's sold out. Oh, Dude, the timing the of timing of that. was incredible. Look behind you. Oh, sorry. Oh, for Urjita, we just reacted all weirdly. Like, what the fuck? That was so Urjita was like क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? Exactly. ये क्या अंतरिक्ष का खुद का पर्सनल बिजनेस है? क्यों बोल रहा है हो गया? मैंने एक गलती से बना दिया अंतरिक्ष का वो कि बोलते मैं ही- चीज बनाने जा रहा था जल गया बीच में से Correct. रोटी बन गई. Dude, and it didn't just fall. The Yeah. clip also broke. So there's no putting it back anymore. No, there is. We'll put it back. After all of Cut. No, let me. We could have continued. We could have continued. But this is nice. This Yeah, is this, cut. yeah, this will we let this all be, and we can continue talking to Urjita while Oshang does this. I think it's very funny. If अगर ये सेम चीज मेरी शादी में हो गई ना मैं रो दूंगी. मैं और मनु रिसेप्शन पे बैठे और pीछे बैकड्रॉप निकल गया. Wow. You know this. Yeah. This had happened in a friend's sister's wedding. I was there and वैसे डांस कर रहे ठीक है बहुत जन डांस कर रहे हैं उनके ऊपर स्टेज गिर गया पूरा का वो पीछे का पार्ट गिर गया उनके ऊपर ही एंड वी ऑल वर लाइक ये तो इसका वीडियो है भाई मैं वीडियो ले रहा हूँ मेरे दोस्तों का डांस कर रहा How हूँ is the most viral video not there on your account? true. You should have Yes. posted this. What are you अरे यार, doing, मतलब Govind? ये तभी मजा नहीं आया now था, posted तभी- now saying this is Urjita's wedding. Done. Collab. मुझे भी views चाहिए. yeah, it was very like मैं देख रहा हूँ मैं फोन के थ्रू देख रहा हूँ like ये गिरने वाला है oh shit मैं लाइव भी नहीं देख रहा You have that video? I don't know where to find it Please but I'll look be there for that somewhere. video, Yeah, yes. somewhere Caption: When you bargain too much with the Adjective guy. Actually, the wedding planner should upload that video. Like, this is why you don't negotiate with us.
हम भी लात मार देते हैं अगर तुम लोग ज्यादा नेगोशिएट कर रहे वो हो. आता है ना कट टू सी दिस इज व्हाई यू नीड टू हैव अ वेडिंग प्लानर बिकॉज जब भी ऐसी चीजें होती है दादा मामा चाचा चाची तो हाथ ऊपर कर देंगे Dude, कि हमने नहीं thank बुलाया God. इसको. Thank God it was young people dancing. What if it was like Old दादा दादी person, yeah. dancing उनके ऊपर हाँ. stage? दादी पे वो स्लैब गिरा पीछे से बोली भैया भाभी के लिए रूम खाली हो गई. Yeah. Dude, I was at a wedding once और वहाँ पे कोई outdoor function होने वाला था and it started raining heavily, okay? And I was right outside. I saw the wedding planner cry, okay? And I saw the bride's mother console the wedding planner कि Oh, it's wow. okay beta, we'll figure it out together. And the wedding planner is going, no, it's just the rain. Wow, this is just again and again behind him. Okay, Yeah, I because think you're we talking have to- about rain Yeah. and ठीक है. wedding. Sorry. Before Yeah. you start. Yes. वो तो चला गया अब हाँ, छोड़ भाई, दो उसको, उसको. ठीक है. ठीक है. हाँ, हाँ, we छोड़ just दो. continue. Yeah. So the thing is, हमारा शादी भी जून में है. So and the thing is, the setting is an outdoor setting. Oh, So no. literally everything that we are planning, Is it is outdoors. on भगवान भरोसे. My mom is like हमारे करम अच्छे हैं बारिश नहीं गिरेगी. You're banking on your karma balance. Can you? My mom is like सुबह क्या शादी है सुबह तो बारिश हुआ नहीं है अभी तक. Bro, that's Yeah, very dicey. Can you June. check Guys, on some weather app कि वो दिन बारिश होने वाली है नहीं कि नहीं? दिखा रहा है फिलहाल तो नहीं दिखा रहा है तो I'm like कि शायद ठीक फिलहाल है. उन्हें पता ही नहीं है हाँ, कि like- उससे पता लगेगा. मेरा ऐसा है कि जो भी गेस्ट स्टारर रहेंगे उनके थोड़े से लाउडर लग सकते हैं क्योंकि गेस्ट वाला पार्ट है वो ओपन है और हमें बंद नहीं करना है. You should not तो mention it. आई एम जस्ट सेइंग कि जो भी शादी में आ रहा है प्लीज गाइस Get raincoat umbrella. You should make that the theme कि Yeah. theme for wedding raincoat. Raincoat, that should be the Yeah, outfit. yeah, जो because- ये बेचते हैं. You should just make it a rain dance to begin with. है ना बिकॉज ताकि मेरा लोग ऐसा tension है नहीं- मेरा ऐसा है कि मैं मेकअप चल मैं पूछ रही हूँ उसको जो मेकअप आर्टिस्ट है हाँ. कि हमारा वाटरप्रूफ मेकअप हो सकता है क्या. Actually no fair. क्योंकि आई एम लाइक ठीक है यार मतलब मैं बिना मेकअप के इतनी भी बुरी नहीं दिखती हूँ. आई फील इट्स लाइक ऐसा नहीं कि नहीं मेकअप निकल गया एंड मनु इज लाइक ये कौन है यू नो इट वोंट बी लाइक दैट. सो आई एम लाइक ठीक है आई एम बैंकिंग ऑन दैट कि चलो कोई नहीं लेट्स एंजॉय. I can't believe Yeah. this waterproof makeup. dude. Yeah. There's yeah. waterproof Real makeup. thing. There's Yeah, of a course, yeah. man. yeah. It's water, Yeah, I know so- about waterproof mascara क्योंकि लोग रोते हैं तो ताकि वो निकले नहीं. हाँ yeah. But I don't know about the other things. अदर थिंग्स भी रहता है मतलब इट्स नॉट लाइक कि तुम धोगे तो नहीं निकलेगा बट ऐसे निकलता थोड़ा कैसे है? नहीं धोगे तो निकलेगा. अच्छा, अच्छा, sprinkle करेंगे कुछ तो नहीं होगा. या तो कुछ नहीं Okay, होता. that's Yeah. good. Okay. How are you with money in general? Oh. And how have you been with money in this new phase of your life? तो मैं बहुत कंजूस नंबर 1 कंजूस बिकॉज द थिंग इज ऑल माई लाइफ अराउंड मी आई हैड हर्ड स्टोरीज फ्रॉम माई पेरेंट्स अबाउट चाचाज एंड मामाज जिनके पास सब कुछ था फिर सब कुछ चला गया. यू नो लिटरली मैंने डेट के इतने स्टोरीज सुने हुए हैं ना बचपन से लाइक मैं अभी राइट ना ऑफ द टॉप ऑफ माइंड मैं 6 कहानियां सुना सकती हूँ मेरे फैमिली के. एक wildest story बता. वाइल्ड ओके Sorry, why were your parents like? I Why did they don't know. keep? Yeah, saying were these this? their bedtime stories? मेरे फैमिली वाले अनहिंज्ड ठीक है. Why did they वो keep mentioning this? Okay, not keep mentioning, but it's just that I was a big fan of stories in general, and my mom got tired of bedtime stories after a point. She's like, मैं हर बार वुल्फ वाली स्टोरी कहाँ से लेके आओ यार इसके लिए. Yeah, let me give her something real. Yeah. Life lessons, yeah. Only life Yeah. lessons. So the thing is because actually हमारी फैमिली बहुत बड़ी है मतलब बहुत ज़्यादा अनरियल बड़ी है ठीक है. there are too many people and they keep getting married so not stopping it's unending right now and I'm also adding to it Yeah, now. मैं तो yeah. दूसरी जात का लेके आ रही हूँ. You think that's why people are going bankrupt? Just getting Yeah. married, too many weddings and all Maybe. happening. You So- said Still on the 6 wedding. stories. You said you had 6 stories. I don't know if I have 6 relatives that I remember right now. See that's what I'm talking about. हमारे बहुत relatives है और सबसे ties है अच्छे मतलब में हमारे एक बहुत पुराने चाचा रहते थे ठीक है. तो वन ऑफ माई बुआज हस्बैंड्स तो एंड ही वॉज वेरी रिच लाइक दे हैड अ महल एंड ऑल in the 80s proper mahal yeah they used to have like this is how my dad described me during that time they used to have almonds for breakfast every day which used to be a big thing. Big thing, yeah. yeah कि रोज आमंड खा रहे हैं ऐसे करके मुट्ठी भर आमंड खा रहे हैं because my dad had been to the place once as a child and he was like He's a baller, dude. मेरे पापा बोला मुझे तो लगा मैं गंजी में आ गया हो गया इतने ज्यादा अमीर है ये लोग. That's actually very funny. क्या महंगा है almonds वही खाते हैं अभी बैठ के जो महंगा है वही खाएंगे. yeah they had gold plates and everything very Oh my rich okay God, ठीक है. okay. तो एंड देन क्या हुआ कि वो जो अंकल है मतलब he kept playing सट्टा बेसिकली cards he kept हाँ, playing हाँ. cards and everything and then he lost everything dude
everything so much so that इतना debt में चले गए that उनके जो बच्चे हैं they had to like start working very soon. And you know what happens, this is my most favorite part about these stories is when dad goes under debt, Yeah. patriarchy goes out of the building. Then all the girls of the family have to start working. Then there is no question of should she work after marriage, bitch, you stay here, you work, you feed the family. Fuck So- marriage, you Oh, keep keep working working. until Yeah, this is done. yeah. बच्चे so- बाल मंडी मखाना खा रहे हैं. हाँ, that's what. So मखाना this- भी महंगा हो जाएगा. मखाना भी महंगा होता so है. हमारे मैं दिस इज माय थियरी ओके सबके फैमिली में कजिन्स में या कहीं पे तो एक ना एक बुआ रहती है हाँ. हाँ इन एवरी फैमिली देयर इज हाँ. एटलीस्ट वन बुआ हु इज अनमैरिड Yeah, शी इज yeah, ब्यूटीफुल yeah, बट yeah, शी इज yeah. अनमैरिड Yeah, yeah, व्हाई yeah. शी इज अर्निंग दैट्स व्हाई शी इज She फीडिंग द knows. फैमिली Yeah. By the way, So- while the kids were earning, okay, जल्दी हाँ ये सट्टा ही खेल रहे थे क्या कि नहीं बंद नहीं कर तो दिया सब था? कुछ खत्म होने जब कि तक बाद बचपन में उन्होंने चालू काम करने किया के लिए एंड देन बोला. खत्म हो गया ना देन द किड्स हैड टू स्टार्ट अर्निंग वेरी अर्ली ऑन And I'm sure कि उन्होंने बताया भी नहीं होगा कि हमारे पैसे जाए जा रहे till the very last minute. Exactly. That's classic man Exactly. behavior, गोल्ड dude. प्लेट्स चले गए, क्या गोल्ड वाले प्लेट्स चले गए. ऑफ कोर्स Oh, भाई, वो तो तुम्हें पहले लगा जाते महल भाई. बेच देंगे पहले लेकिन जाते. आलमंड और प्लेट्स वो तो- रखेंगे. या, अभी तो पूछेगा आलमंड के छिलके तो होंगे ऐसा मत कर यार कुछ तो government- बचा के रखा होगा ना भाई, यार. महल this भी is- गया. महल यार तू ऐसे भाई, तू- तेको I don't know, क्या You don't कुछ तो know what बचा के happened. रखा भाई, होगा. Bankrupt, भाई, अगर that's why. कोई डेट में चला जाता है ना Sorry, हाँ. मेरे को and gambling debt- addiction नहीं है. and मुझे- debt is never like 1 lakh or 2 lakh Yes, it's always yes. multiples of Yes. lakhs and वो टाइम पे तो कुछ था 30-35 lakhs का लोन था उनका वो time पे उस time पे 35 yeah, 35 it's was- ज़्यादा, almost like 75 lakhs to 1 crore I Easy, also easy. not- I mean, I not don't sure. understand हाँ, तो inflation, फिर- but इतना तो होगा. उतना एक्चुअली तो इतने होगा डेट के बाद अगर घर पे गोल्ड प्लेट रखोगे तो देन तो योर एन एसहोल. देन वो झूठे प्लेट है ठीक है ये शाया ग्राम का किधर से प्लेट लाया है तुमने गोल्ड प्लेटेड 925 सिल्वर कैरेट गोल्ड प्लेट का साइज कम हो गया था. ठीक है चल. अब Yeah. गोल्ड फिल्म वाले प्लेट्स रख रहे हैं. पहले में तो घर ही जाता है भाई ऐसे But then केसेस में out of debt now? out of because they are out of debt because like that man he passed away also Oh. but So he's and out. because So- he's very old Yeah. and then Oh, but once the you die, kids- your debt gets this thing, or? no so the daughter paid off the Oh, debt okay. Yeah, So it that's the gets thing. passed on. That's a great. the oldest hack. daughter Yeah. the oldest daughter You know, of the it ends most with you. I thought so. I mean, so How great was I'll tell that? you something. When my dad passed away, he had some debt, but his debt was insured. Oh, Yeah, that's the thing, dude. I had no idea. His debt, like he didn't take money from SA, किसी दोस्त Yeah, वो से, he took हाँ. it from the bank. But Okay. he insured that. क्या बोलते? He Loan. insured He insured that that loan. insured, yeah. So when he passed away, the debt also ended. Oh, so yeah, wow. you are right. Yeah, It so I'm could right. end. Yeah, yeah, yeah. Nice. Thing. Sorry, the Tell, old. tell your Yeah, family I members was about so this. happy, dude. Tell your family members about this shit. dude. Yeah. How is This this racket. a thing? I think it was some secret other uncle of yours No, who paid no. off the debt. Yeah, yeah. My name's HDFC Bank. Like no, you're my uncle. ICICI Prudential, I remember Yeah. because he found some papers which said that. Oh. Yeah. Wow. बता भाई. देती यार ये बेचारे ये सब काम क्या किए बात जा रहे है. थे ये Yeah, बच्चे. yeah. So But the not oldest daughter. even the bachche, just the oldest daughter of the family. Oh no. And she paid off everything. She had a great job, and like she's a toughie. She's a very nice. But then I can imagine that if he had not gone into the debt, Yeah. इसकी शादी करा देते 24 की कभी उम्र काम ही नहीं में. कर पाती थी. Yeah. हाँ, that's Yeah. true. Dude, Yeah. I'm glad my dad's loan was insured because मैं तो बिल्कुल नहीं पे करने वाला था. There was no way I would have been able to do it. होशांग कन्वर्ट हो जाता है. ये मेरे है ही नहीं. ये 600 रुपए का योगर्ट खरीदता है ये क्या डेट कहाँ से पे करता है ये. Yeah, I mean they don't know the story, so let her tell I that mean first. I'm just like his spending habits. Yeah, is my what I was spending talking habits about. are terrible. If I can ask, Huh. like, so he did, your uncle went bankrupt at some point. yeah. Did he have a lot of money to go that bankrupt, to go that much in debt? That's what I'm saying. No, he was very rich. Very He had a- rich. Yeah. Like महल में gambling- कौन रह रहा है? That's true. But also gambling में just goes so. अबे मैं डेल्टन या जो भी मैं गोवा में I went to that casino. I didn't even realize I spent 20,000 What? on. I didn't realize. I How just. do you not realize? I'll tell you why because One, yeah ja- no ja- because ja- I ja. was I got a profit of 7,000 in the beginning and I was like हो गया ना यही तो चूतिए है मुझे ही That's पता how है they get कैसे you. करना है and then Classic. yeah, I kept putting in money then 2,000 लॉस में गया I was like ठीक है ये वापस बनाता हूँ Yeah. करते करते 20,000 चला गया I was like नहीं oh fuck ये तो कब 20,000 चला गया तो Yeah. मतलब
जा सकता है That's very how it easily. starts. Oh. Yeah, it's a You don't slippery even slope, realize. dude. I've never been to a casino, but I'm scared, dude. I will never go. It's not just about the casino. Gambling is very addictive. You don't वही understand. gambling in general. I had the best time because I was always around people who were gambling. So whenever they were making money, I was balling out. Like my friend who used to bet a lot in IPL during school, okay? And they're kids, dude. They're like in Yeah. 10th, 11th grade, but they have a bookie and all of that. And every time they would like make a lot of money, we would take trips to Delhi, stay in 5 stars, and they were Oh. paying for me. I was just around. Actually, this is the best thing to be the entourage of a gambler. बस Yeah. सही है. उसका गंदा टाइम चल रहा निकल जाओ वहाँ से और Because the thing is, they're making so much money, they can't take that money home. Correct. How are they gonna show कि कहाँ से आया पैसा? They can't buy shit. So one of my friends bought me shoes one time. वो अपने लिए लेने गया था, तेरे को चाहिए? मैंने कहा दिला दे. Once we went to Delhi, we stayed at a Radisson when I was in 10th and a 5-star. What the hell, dude? Just balling, no dude. wonder Who he has these spends friends? so Yeah, much. I was around a lot of rich people growing No up. wonder he spends so Yeah. much. ये अभी करने में मैं 2 बार सोच रहा हूँ ले अभी 10th स्टैंडर्ड में. Dude, that's free money now for them. Yes, dude, I remember. तो मैं एक प्रोजेक्ट में गोवा के प्रोजेक्ट के लिए गोवा में गई थी जहाँ पे our mutual friend Shreyas was also there. So we were in this hotel because this is just post COVID, तो सब बबल में था. तो वहाँ पे there was this everybody was a rich kid Yeah, except me. I yeah. think मैं मतलब मुझे पता नहीं ऐसे environment में डाल देते जहाँ पे मेरे को छोड़ के बाकी सब अमीर होते हैं. मैं उनको देख के ऐसे इरफान खान की जैसे देख रहे आपके घर में तो छुरी काटे से खाते होंगे ना. तो वहाँ पे क्या होता था every time something would happen. There was this one guy, okay. Just cut the name, okay. He I'll would, beep. yeah. He would just कुछ भी होता था कि bro I'm gonna buy this flat over here in Juhu and then ऐसे बोलता था. मैं ऐसे देखती थी, मैं श्रेयस को देखती थी, श्रेयस लाइक तू ध्यान मत दे every time anything तू ध्यान मत दे ये बड़े लोग की बात है तू ध्यान मत दे. So then that I know that guy and I know how rich he is. He I also know knows exactly him. how he said it also. yeah I'm also- He's a South Bombay kid. He's a so so- Okay, I yeah. remember this one term he used. I'll never forget it till I die. उसका ऐसा था कि what is money? He was full. He's gone. Okay. He's like, what is money, bro? Money is just free cash. It is just like monopoly के पैसे है, paper है. आज खोएंगे, कल कमा लेंगे. I was never like that though. Yeah, of I was course. never like Yeah, I you was know just why? fine with money. No, you know why? Because you never had to see money. Others were giving you stuff. You never saw money. Yeah, imagine तो Hoshang's dad's debt is still there, but his friends are having to pay it off. उसके friends पोकर खेले जा रहे हैं कि please जिता दो. A lot of my friends, including Govind, are paying for that in some way or the other. But wait, so Yeah. now have you started spending more? Like, Okay, I'll tell you. Okay, so I started earning some 7 years ago, and like right out of college, like Yeah. at 19. That's when we met. Yeah. At 19, I got my first internship. My first internship where Yeah. Hoshang was also there. 3,000 rupees. Yay! We used to get 3,000 rupee cash, which was such a big amount Yeah, for me. I उस was time like, GPay भी नहीं था, हाथ में आते I थे. kid you not. The first thought when I got that cash was like, कितने सारे वड़ा पाव खरीदूं? इतने सारे वड़ा पाव बस हर दिन जाके भैया एक और नोट ये ले लो. ऐसा नहीं कि सबवे के बारे में पता नहीं था, बट वड़ा पाव. वो भी जंबो किंग वाला. Yeah. नहीं वो तो नहीं, महंगा जम्बो किंग वाला वाला है. नहीं. अशोक regular, वड़ा पाव. हाँ, yeah, proper 3,000 के बाद assist तो खा ले होगा. जंबो किंग यार. जम्बो किंग से बेटर दूसरे वड़ा पाव होते हैं ना Yeah. actually. Yeah, Ashok Vada Pav is the best. Yeah. जम्बो Vada किंग Pav. is the worst The option worst. is what Yeah. I'm saying. Fair. So मेरा ये था कि बाकी तो मालिक कितनी दयालु हो आप. तो yeah. मालिक ही थी वो. Yeah. So then after that I got my first job at 20, and then since then I started. So I was freelancing and I was doing the job. So I was earning good amount of money even in a month. Like it was great money for me. Yeah. But what happened that year was हम जो जिस घर में रहते थे कल्याण में जो हमारा घर था, so we had a full building like 3, I think I told you also 3 floors with a terrace and everything. ना दादाजी ने बनाया था सब, but you know as they say एक generation अमीर दूसरी generation गरीब. तो it's not like चाचा and my dad they were poor or anything, but they were middle class. Yeah. So वो building को संभाल नहीं पाए, and for some reason after my दादी passed away, building just gone. What do you mean संभाल नहीं पाए मतलब? संभाल नहीं पाए, as in so you know how you need to by Maintain renovation नहीं कर all पाए you उसको need सही to से. maintain and all, and Ah. maintaining takes a lot of Yeah, money, yeah, yeah, for yeah. a building. और कितने घर थे इस बिल्डिंग में? So 3 floors. On each floor there were 2 houses. So total 6 houses. Oh. Six hou- Yeah, That's a and lot of responsibility. 6 houses, and also like 3 houses were 2 BHKs with balcony and everything. So it was like
या व्हेन आई थिंक ऑफ इट आई एम लाइक यार क्या अमीर जिंदगी थी हमारी, हम इतने बड़े बड़े घरों में रह रहे थे. डू 2 balconies dude in every house. Yeah. We had a jhula dude in Mumbai. We had a jhula. And like that's one Nice house. chulas. उसके Yeah. बाद there are you go out. That's The 5 also more your houses only. Yeah भाई तो And the ये terrace. exactly. So all of that just we had to vacate the building because वो maintain नहीं कर पा रहे थे. And after so from a 2 BHK we moved to a 1 BHK. ठीक है. And वो rent था तो मुझे rent का concept college के बाद पता चला. मतलब मेरा ऐसा था कि now that I think of it, what great timing for God. He's like इसका education खत्म होने दो. फिर मैं देख भेजता हूँ इसको. फिर मैं Yeah. फिर because I kid you not, I still think अगर वो नहीं हुआ होता ना तो मैं इतनी अब अभी भी मैं कहीं छोटा जॉब कर रही रहती. वो मोटिवेशन motivation ही नहीं आता आता ही कभी. हाँ, नहीं. बिल्कुल. तो उसके बाद 1 BHK में रहने लगे, रेंट भर रहे थे, बट इट इज स्टिल कल्याण रेंट, लाइक 12,000 था तभी का रेंट, डैड वाज पेइंग इट. सो तब से मैं जो सेविंग करना चालू किया, बिकॉज सिंस देन इन माई हेड इट्स नॉट लाइक मुझे गुची बैग वगैरह चाहिए, मेरे को घर Gold चाहिए, plate चाहिए मैं घर चाहिए. आई नो वेरी लाइक अनरियलिस्टिक स्टैंड, इट्स स्टिल देयर इन माई हेड. आई एम लाइक हाँ, I mean, of course. Yeah, of yeah, course. yeah, and you see it like right in front of your eyes when it's happening. I Yeah, saw the yeah. building Yeah. getting like toned down and everything. Yeah. So after that I'm like मुझे घर चाहिए बस. मुझे मेरा घर किधर भी बना, मुझे मेरा घर चाहिए. उसके बाद मैं पूरा जीऊंगी. बिल्डिंग की एक घर. पूरा बिल्डिंग चला गया. नहीं, अच्छा what मुझे do you want? नहीं वन डन हाउस है. तो उतनी रियलिस्टिक हूँ मैं. Realistic ambition है, ठीक है? Yeah. 6 घर. Exactly वही चाहिए. 6 घर नहीं Yeah, that's a weird कि मुझे 6 घर चाहिए एक बिल्डिंग में. It's not a film story जहाँ पे उड़ जाता मैं वो वापस बिल्डिंग Yeah, वापस लाके रहूंगी. That would be amazing. Very poetic. That would be Actually, that'd be amazing. very good कि वो घर पूरा बिल्डिंग 6 वापस. घर वापस, बट कल्याण में नहीं जाना Yeah, वापस. yeah. Imagine there's a mall there now. You बिल्डिंग बैंड्रा के बीच में. Yeah, so after that I'm like मुझे घर चाहिए, ठीक है मुझे. And every time I would say this to anyone, they would be like in मुंबई में कोई पॉइंट नहीं है घर रहने का. I'm like तेरे लोअर पर में 2 फ्लैट है, ठीक है तू चुप कर, ठीक है मुझे मेरा खुद का घर चाहिए. So even now it's like I've started buying थोड़ा stuff, थोड़ा spending on myself. Dude, after so many years of spending, you won't believe I had my first trip 5 years later after I started spending, after I started earning. Oh, that's 5 incredible. Because I was, dude, okay. I'll थोड़ा if I'm going too abrupt, if I'm You feel jumping, free. Yeah, please yeah, let say. me know. So I met my boyfriend Manu Why 3 did you years whisper ago. that? I whispered that because I was going to. अभी भी छुपा रही है क्या? क्योंकि So मैं I met इतना my- हाई पिच हो रहा है मेरा. I realize I need to थोड़ा I met my BF. मेरा लफड़ा, मेरा मर्द, आइटम. I heard मर्द but मेरा लफड़ा मैं पहली बार सुन रहा हूँ. Yeah. So for me it's a lafada, for him it's a relationship. That's the dynamic. This episode is going to be spent a featuring Urjita's lafda. लफड़ा. हाँ, you met your लफड़ा. I met my lafda, and so we started dating within months of meeting each other. I really liked him. He was very cute and all. But the one thing I remember, the one thing that I really liked about him was right off the bat जब मैंने उसको बोला था कि I want to buy a house. And then I had gotten so used to following that up with, I know it sounds irrational. Yeah. And he said, no, it's not irrational. You want to buy a house, it's not impossible for you to buy a house. And I was like, marry me right now. I was like, see, done. Marry me right now and contribute to the house. Also, let's split it. It's not impossible at all if 2 people contribute Yeah. to it. He reciprocated her feelings and Urjita like actually मेरे को gold plated plates भी चाहिए. बादाम भी चाहिए. But ghar is not impossible. It just depends on where you want to. where Yeah. you Like want I know it. right now I can buy a house maybe somewhere in Badlapur also, like a 1-room kitchen. Dude, that's also crazy that you can. That's amazing. You should Yeah, be very yeah, proud yeah. of that. अरे नहीं, क्योंकि but मैं वो साइड भी नहीं गई. अगर तू कांदिवली मीरा रोड साइड भी गई वहां पे भी मिल सकता है. बस Yeah. बैंड्रा Yeah, अंधेरी yeah. से आगे if Yeah. you go na, it just It's- gets a yeah, little yeah. It's too dicey. expensive. So my thing was I was saving only since then. Since my first 5,000 वाला internship also, other internship. Yeah. I was saving. तो savings में जा रहा था. मैं उसको मेरा अभी भी म्यूचुअल फंड्स का जो जितना भी पैसा है, it's not a lot, but I'm like ये मुझे सीधा घर के लिए तोड़ना है. So I'm this focused कि नहीं भाई किसी कुछ चाहिए. भी हो जाए. Now that brings us to the first year of our relationship. ठीक है? Yeah. After- In the first year, Manu discovered a lot of things about me. Yeah. ठीक है? He was like, भाई तो बहुत ही कंजूस है यार. I know Manu a little bit. He likes spending. Like he Yeah. likes things Yeah, and yeah, experiences and all of yeah. that. So Really funny. He's like पेस्ट्री खाएगी. नहीं मुझे घर चाहिए. Like अरे नहीं भाई खाना तो खाना पड़ेगा ना यार. ऐसे थोड़ी घर सिर्फ घर.
Okay, I remember. वो मुझे कोई तो आइसक्रीम खिलाने कोपेटो वगैरह हाँ, ऐसी कोई तो जगह artisan लेके गया Coppeto था. gelato. I was like 350 पागल हो गए क्या ये लोग? 0.2 square feet आ जाता है इसमें. Yeah, because in my head I knew those things were good, but I always thought other people would do it, not my own guy. And he's like, but I'm paying. I was like, पागल है, तेरी भी इतनी सैलरी नहीं, चुप कर. And then I had to remind myself, अच्छा नहीं इसके पापा के घर है, okay fine. He can afford. I like how everything connects To a house. to a house somewhere. किसी का तो घर कहीं पर अगर है. So this would be. तो आइसक्रीम खरीद सकते हो तुम लोग. I like this logic. क्योंकि मेरे से पैसे हैं, तो घर खरीदो ना. उस लॉजिक से मेरे को सांस भी नहीं लेनी चाहिए. But that's, I know, crazy. Of course, now I have changed a lot. I have improved a lot. But तभी मेरा वही था. इतने So पैसे cute हो पागल है क्या? So he found it very cute कि अच्छा ये पैसे बचा रही है. And then after a point, थोड़ा करके very nicely taught me how to spend. He's like, Urjita, you're a comedian. You need to look good. I remember there was this one community का event, commune का event, जिसमें they had called me to like give a performance and everything. And that was the first time I was doing like a big event like that. So उधर मैं गई. I was wearing a one piece, okay. But it was a black one piece. So Manu, after the show, he was like, very nice set, very nice. But he's like, but baby, तुम volunteer जैसी दिख रही थी. He's like, Oh no. He thought you're making the human chain for the chief and guest. then I looked around and I was like, oh yeah, they are wearing the same clothes. I think the audience will also be confused कि ये स्टेज क्यों जा रही है. भाई वापस आ. Performer. तो मेरे जैसे मिलिट्री में नहीं के स्ट्राइप्स होते हैं, वैसे ऐसा लग रहा मैं सीनियर वॉलंटियर दिख रही थी. Like you have gone to introduce the main actor. Yeah, and they were like, ये 15 मिनट हो गए, चुप क्यों नहीं हो रही? but after that, so then after धीरे करके Manu was like, see, you think that looks don't matter, you think that clothes and presentation doesn't matter, whatever you're saying, of course whatever you're saying is great, but first impression, like there are some things that will make you feel good about yourself while you're on stage. So then initially like he bought me a few clothes and I was like, पागल है क्या, 2000 येड़ा है क्या तू? And then every time that would be the reaction. But then you realize उसके पापा का Yeah. घर है. So you were like, चाचा का. उसकी चाचा हड़प नहीं रहे. So then after a point I started realizing, actually you know what, because कैसा होता है ना, it's like एक बार चटक लग जाती है ना महंगी चीजों की. Once you taste the blood. Because then I'm like, ये देख रहा हूँ, ये पोलो. I know. मैं इतने सिंपल लिंकिंग रोड वाले कपड़े पहन रही थी मैं, ठीक है तब. एंड देन सडनली धीरे करके मेरा स्टाइल चेंज होने लग गया. देन एप्पल वॉच आया, एप्पल फोन आया. एंड देन आई एम लाइक, यू नो व्हाट, कैसे रह रही थी मैं पता नहीं. Same. Once you start spending, you're like, And you see the other side. और भी चीजें हैं क्या जो मैं खरीद सकता हूँ. Wow, it's never ending. Yeah, and I was like, I'm so glad मानो 19 साल की उम्र में तो मिलता ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती. ठीक है. तभी yeah, the difference is तभी you were like, wow, 15 वड़ा पाव मिल सकते हैं इसमें. Because after a point, like I'll tell you, this hit me this year. I turned 27 this year, and I was like, यार मैं 18 की थी तब से मैं काम कर रही हूँ, 19 की थी तब से कमा रही हूँ. I'm like, कब तक मैं सोचती रहूंगी कि कल्याण जाना है तो ट्रेन से जाएगी, कैब से जाए, कब तक सोचती रहूंगी मैं. And I was like, you know what, मेरे पास गाड़ी नहीं है, उतने पैसे बचा रही हूँ मैं, तो मैं कैब कर सकती हूँ once in a while. बिल्कुल. You have to, क्योंकि after that you're like, अब You have to कितना- enjoy that money also that you are making. Yeah. I was with Shetty, ठीक है, Siddhartha Shetty. We were Who coming. also just bought a house, by the way. Yeah, he bought a house. Just But- me, काफी टाइम काफी हो time गया, से. yeah. But we were coming to Khar only from Kandivali. बहुत ट्रैफिक था तो I convinced Shetty कि हम ट्रेन से जाते हैं. He was like नहीं. I was like नहीं, ट्रेन से जाते हैं. And we reached Borivali station. शट्टी बैग आगे रख के खड़ा. बाय द वे कोई भीड़ नहीं है, पता नहीं. दोपहर के 12 बजे कोई भीड़ नहीं है, पता नहीं वो आगे रखा. And then a fan recognized
Shetty. And he's like, hey, Siddharth, I love your content. और Shetty bag आगे लेके, oh, thank you. I was like, oh, I'm so sorry. I made you travel by train. ये क्या करके रख दिया भाई, bag आगे रख के. He's like, thank you. Shetty have made, like, एक बार उसके साथ पानी पूरी खा रहा था, and a fan was like, yo, Siddharth. I was like, मैं Shetty के साथ जा भी जा रहा हूँ यार, मतलब Why उसके do you? fan. Yeah, with Shetty, you're doing all these down market things that is not recognizable. What is that about, dude? अरे मुझे बस पानी पूरी खाना था, तो फिर मैं पानी पूरी खाने गया था. यूनिक्लो के कपड़ों में ट्रेन पकड़ रहा है यार. गोविंद तेरा तो घर भी है यार. यूनिको के कपड़ों में घर के साथ मैं पानी पूरी खा के स्टेशन जाके. You are the अनन्या पांडे we deserve. नहीं यार, ट्रैफिक था उसके लिए ट्रेन लिया था. Yeah, but हाँ. yeah, of course, yeah. Fair. But now कितने साल हो गए तेरे रिलेशनशिप को? अभी 3 साल हो गए. और अब शादी हो रही है. अभी शादी हो रही है. yes. उसमें कैसा लग रहा है? भाई आई थिंक शादी बड़ी ही होनी चाहिए जितनी भी हो, बिकॉज दैट You इज want a big fat Indian no wedding? not big fat Okay. but it's like considerably मतलब with events and all everything I'm saying कि Big healthy. healthy yeah BMI medium ठीक है. तो उतनी होनी चाहिए. I'll tell you why, because with each payment you make, no, your patience is getting tested, and then you have to ask yourself, do I love this guy this much? And if the answer that helps you decide. I'm like, yes, the answer is yes every time, because I kid you not, अगर एक भी बार मेरे आंसर नो आता ना, मैं कैंसिल कर देती कि I don't think this wedding is worth this much, give it to me back. What is that one purchase you have made for your wedding जहाँ पे बहुत close आ गई थी तू कि do I really like this person that much? No, and ये तो बिल्कुल भी नहीं. I love नहीं, him but very what much. is the most expensive Of one? course, at one point I was like, अच्छा खासा लिव इन में रह रहे थे. इस सब की फ्री में रह रही थी मैं. या फ्री में भी, नॉट फ्री में, बट लाइक वी वर पेइंग रेंट, बट स्टिल इज लाइक फ्री में हमारा सब हो रहा था. ये क्या है इतना पैसा? आई टेल यू. सो द फर्स्ट परचेज दैट वी मेड वाज बाय माय ओन मनी ओनली. व्हेन यू रेंट का एडवांस दिया 2 लाख. दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई पेड 2 लाख आउट ऑफ माय पॉकेट. मेरी जो गांड जली है इतनी ज्यादा. आई वाज जस्ट लाइक, पापा आप तो कह रहे थे आप दोगे. Yeah, I was gonna ask, are they not paying for anything? क्या? No, of course he's gonna pay, but then No, it's not like Manu. कि- Your family paying for family. anything? No. So they are also paying, but it's like it's me, Manu, my family, His all of family, us सब कुछ together. मिला Yeah, सब कुछ team मिला effort. के. It's a team effort. Yeah, and also like Manu's family won't be paying for a lot because it's like हमारे बहुत ज्यादा guest है भाई. हमारे मतलब it's like Yeah, you they mentioned. can't even compete, Yeah, dude. And it's like it's not fair. It's Yeah, like fair, we do fair. 50-50 in this उसकी case. फैमिली केरला से आ रही है. is from Yeah, Kerala, so they're ना? already paying for the flights and everything, and Yeah, I looked correct. at the time like, भाई ठीक है. तुम लोग मत दो, it's okay. No, मैं it's एक okay. extra brand book कर लूँगी. Yeah, It's okay. yeah. They'll be happy to come here from Kerala. सब Exactly, उनको मजा आएगा कि yeah. Bombay, wow. बॉम्बे, हाँ भाई वो तो बोल रहे थे 2-3 दिन के लिए रहेंगे. I was like, ए हम नहीं दे रहे कबाड़ा, हम नहीं दे रहे, ठीक है. But what is the most expensive venue ही होगा? I'm Venue guessing, हाँ. and okay, so the second thing that I kept debating over everything. Okay, for everything I was like, इतने की क्या जरूरत है, इतने की क्या जरूरत है. So the lehenga, okay. Oh, So yes, now the most important thing. So here's the thing, okay. It's like in my brain, somewhere in my brain, I want a beautiful lehenga. Of course. But that part of my brain doesn't know कि मुंबई में decent लहंगे 50,000 से चालू होते हैं. Yeah. And so I और घर भी went. तो चाहिए बाद में. Yeah, dude. Yeah. I'm like every time I'm like ये तो down payment है भाई. ये तो कैसे करूँ मैं? So we started with थाने. अभी assume कि थाने में कम rate होगा थोड़ा. भाई थाने में भी 30,000 40,000 है. I'm like ये तो साला अच्छा है भी नहीं. तुम क्या दिखा रहे हो? ये 30,000 की तो मैं नहीं हूँ. ये लहंगा इतने का दे रहा है. तो इतना महंगा. And then finally during that week what happened was Ashish Solanki called me. He said कि will you do the Pretty Good Roast show? I said yes, and I was like दिल्ली में होगा ना ये. उसने बोला yeah, and he's like flights and stay on us. I'm like, can you book stay for 2 days? And he said yeah, why not, sure. He said why do you want for 2 days? I'm like तो दिल्ली में मैंने लहंगा लिया and I वहाँ kid you सस्ता not. पड़ता है? कितना सस्ता पड़ा I kid you price not. wise? If you look at the लहंगा, you हाँ. will be like ये तो 1 लाख का है. 20,000 में लिया. क्या वो. बात कर रही है? 20,000 में लहंगा इतना लिया है. difference? I Yeah, didn't dude. think Delhi- Fucking, and it's way prettier than the lehengas I saw here also. I didn't think Delhi would have cheaper No, lehengas. Delhi does. Dude. Delhi में बहुत सारे market Delhi, जहाँ पे dude, सस्ते real हैं. estate का जब भी प्राइस तुम हटा हाँ, देते हो ना, exactly. तभी क्या ही बचता है भाई. Exactly. वो सेम जो मणि उधर लगा है, उधर ये मणि लगा है, उधर 4 मणि और लगा के देते हैं वो. That's true. Yeah. ड्रेस को.
It's only ये the सही है। branded thing which remain the same. Dude, बाकी तो I was just like भाई उस दिन पता है हम धूप में घूम रहे थे तो बेसिकली मेरे को सनस्ट्रोक आने को था ठीक है क्योंकि इतना धूप था बट आई वाज लाइक आज का दिन मिस हो गया तो फ्री में तो कम पैसे में लहंगा नहीं मिलेगा मैं धूप में घुमा रही हूँ मानूंगा कि यहाँ पे नहीं बट फाइनली वी फाउंड अ लहंगा इट वाज और ग्रेट उसने कहाँ से लिया कपड़े? सो मनु ने इधर से ही लिए अच्छा। क्योंकि उधर उसको आफ्टर माय लहंगा इट्स ओके मेरे वाले पे खर्च कर लेंगे it's okay, वो भी it's okay, महंगे ही मेरे होते वाले। हैं। या It's भाई very expensive. एक शेरवानी 20,000 की Yeah, yeah, I'm आराम like, से। लड़कों के इतने एक्सपेंसिव कब से बनाने लग गया Dude, है it's wedding, no. They Yeah. know. They This is know. the Dude, season they make all the money. Dude, I told the guy also कि भाई के साथ लेडीज है इसलिए आप ज्यादा चढ़ रहे हो क्या 20,000 में क्या दे मेरे रहे हो भाई के शादी के इसमें मेरा कपड़ा इतना महंगा था इसलिए मेरी तो शादी भी नहीं How हो रही much है did भाई। you spend on your clothes in your brother's No, wedding? my brother spent, I didn't spend shit, but मेरा भी कुछ 15 कुछ तो था ही। अबे सस्ता And- है। अरे एक But ना एक बाबा, कपड़ा ना यार। एक अरे डूड मतलब देख एक उतने का था सस्ता लिया क्योंकि आई वाज लाइक मैं नहीं ले रहा उतना महंगा देयर इज Yeah. जस्ट नो रीजन and it was also during the like right after the lockdown I was like there is just no reason to buy Yeah. कितने लोग देखेंगे आधे जन तो आ नहीं पाएंगे कोविड होके बैठे हैं घर पे हाँ I यार spent किसको 40. दिखाना है हाँ। यार? You spent 40 On 2 outfits. Okay, But for okay, my okay. best friend's wedding who's as good as a brother, तो उसके Okay, लिए. okay. But No, fair, even fair, that is yeah. a lot. That is a lot, dude. If you think 15 ये था I think I bought 3 or 4 I think तो फिर अभी उतना ही हुआ रहेगा बढ़िया my thing is I don't mind spending money. It should be worth it. That is my Yeah, only thing. yeah, कि yeah. just because दुल्हन है इसलिए तुम एक तो पता सबसे worst conversation we had with the makeup artist ठीक है मेरा हर टाइम ये मुंह खोलते थे मेरा दिमाग घूमता था because ये चालू ही 1 लाख से कर रहे हैं भाई. So the first makeup artist I spoke to, she told me कि 1 लाख होगा and I was like 1 सबका lakh per event or 1 लाख पूरा मिला के एंड देन आई थॉट पूरा मिला के ओके तो मेरी 5 सिस्टर है एंड मेरे 5 साइडर्स है मेकअप लगे साइडर्स इज बेसिकली समबडी हु अप्लाइज मेकअप अलोंग विद यू सो लाइक योर सिस्टर बुआ मामी चाची दीस आर दे आर कॉल्ड साइडर्स सो देन ये लोग कहाँ मिला के ना और शी side के. हाँ Siders is such a साइडर्स good talk. या साइडर्स ये सब इतने होंगे सो शी सेड कि उनका तो अलग से एंड आई वाज लाइक तो मेरे अकेले का 1 लाख एंड शी सेड या एंड आई टोल्ड हर तो इट स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड आई टोल्ड हर कि देखो मुझे इतना मेकअप लगाने की जरूरत नहीं है एंड शी सेड ऐसा सबको लगता है Oh, no. Whoa. wow. तो फिर They know their value. They're like, हम कुछ भी बोल सकते हैं इनको आना तो पड़ेगा ही हमारे पास. Yeah, they are like नहीं उनका ऐसा ही तो खुद ही कर लो फिर इतना है तो इतना आपको लगता है ना like कि नहीं I understand like in some makeup like if you have like मतलब a lot of pimples and everything you need a lot to cover up the face and I'm like मेरा तो clean ही है मैं भाई ककड़ी खा रही हूँ यार रोज clean skin के लिए so she's like नहीं ये तो लगता है HD makeup तो there's a thing called HD makeup It's called HD It's makeup. called HD yeah makeup. and I'm like HD नहीं मेरे को natural चाहिए natural में भी उतना ही पूछ 780p हाँ, हाँ, 780p 780p yeah नहीं बट फिर साइडर्स को नहीं चाहिए मेकअप साइडर्स को कोई जरूरत नहीं है साइडर्स को देना पड़ता है वरना वो बहुत शादी में हो वो जाता है नाटक भाई, करते हैं यार। एंड द थिंग इज सी यू कैन नॉट Yeah, of आई टेल यू course. व्हाट हैपेंस इन योर रूम यू आर गेटिंग रेडी फॉर एन आवर और सो और मोर देन एन आवर समटाइम्स फॉर 2 There'll be hours other यू आर गेटिंग people. रेडी सो अदर पीपल दे कीप कमिंग इन कैन आई गेट अप Yeah, कैन yeah, आई yeah. गेट अप टू शो हाँ, आई जस्ट वांट टू शो वेट like, 1 see, second suppose if- अंतरिक्ष Yeah. हाँ सो सपोज इफ यू आर द ब्राइड हाँ. ओके यू आर गेटिंग रेडी हाँ. आई एम द साइडर ओके तू रेडी हो रहा है मैं ओके से कितना टाइम लगेगा और अच्छा है भाई आप कर रहे हो मेकअप हाँ दिखाओ तो आईलाइनर अच्छा है मैं भी तेरा सोच सही रही है थी भाई। तेरा तो सो बढ़िया है। दिस कीप्स हैपनिंग देन इट्स लाइक जिनको भी But that's so rude. You're the By the way- bride. by but the way it's like if you don't give them so it's the thing it's like you have to offer कि मैं मेकअप लगाऊंगा even and before you everybody- said anything I got awkward like when you Yeah. stood here I was just Yeah. like ये क्या बस खड़ा है कोई yeah Yeah, imagine so I'm eating food and just come to me सही खा रहा है यार तू तो मस्त खा रहा है तेरा अच्छा सही है खा रहा भाई है. तेरा सही चल रहा है यार बट yeah तू but Yeah, how much is but- it with the ciders So ciders and also so most makeup artists in Mumbai at least for ciders they charge anywhere between 3 to 5,000 for one One look. person. For और one तेरा look. अकेले का 1 लाख. Too much. So I did not go with that makeup artist of course. I found Yeah. somebody in Kalyan who's very good. Patch her name if the makeup is good on the day. But उसने बहुत बढ़िया डील दिया हाँ. and then the thing is I tried so hard you know मैं बोलना ट्राई किया देखो मैं कमेडियन भी हूँ मेरा इन्फ्लुएंसर भी हूँ देखो मेरा इतना अकाउंट है इतने फॉलोवर है
अच्छा हमने मिलियन वाली को डिस्काउंट नहीं अरे दिया यार था। उनका ये हो जाता है वही नहीं उनको हमारा value ही एंगेजमेंट नहीं है। ज्यादा अच्छा होता है, आप समझ नहीं रहे हो, Yeah. कॉमेडियंस का एंगेजमेंट। Yeah, तो आपको तो नहीं। 4K चाहिए होगा इसको एक्स्ट्रा I was gonna Yeah. say अब तो this, influencer हो। get sponsorships and we Yeah. like वो videos Dude, I पूरा saw 2 people do that. They're getting married and moving into a new house, so they made a reel now. Ki, hey, we're looking for brands who support us that. and make our dream house. Dude, the thing is मेरा reach उतना नहीं है, मेरे followers उतने नहीं, and the thing is it makes sense if you are like a regular poster, but if you're irregular it's very difficult. मुझे Because your एक job is also not just Instagram. ना. Exactly. तू हर रोज Yeah. stand up नहीं डाल सकती. एग्जैक्टली Yeah. हैं, और मेरा ऐसा है कि रेडिट पे मेरे बारे में गॉसिप जब तक नहीं होता तब तक मैं फेमस नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे। मेरे बारे में 4 पोस्ट में मेंशन रहेगा, वो भी अंडररेटेड कॉमेडियंस में। बोला कि कब तक अंडररेटेड रहूँ मैं, कभी तो it's all that, it's all वही है Yeah. मेरे इसमें भी बस Yeah. यही है But let's कि just say Reddit coverage is not always a good thing. It's not, I it's know not from a good experience. thing. It's a sign कि okay, enough people are talking yeah, about it. That's that's it. That's what, it. that's what. So but it's a lot I'm of saying खर्चा, just हाँ। get brands and just get them it to was so sponsor। easy. फिर I'm views नहीं आए trying, तो क्या man. हुआ, views नहीं आए तो क्या हुआ, मिले अरे सॉरी नहीं चला, नहीं चली शादी। घोस्ट कर दे। वो ब्रांड को कन्विंस करना इतना डिफिकल्ट है। यू नो आफ्टर सो मेरा ऐसा है ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लोगों से को अप्रोच करूँगी कि आप मेरा करके दो फ्री में। इफ दे ऑल से नो, मेरा ऐसा हो जाता है कि है मेरे पास पैसे, हाँ, ठीक है फिर तो तुम लोग ego की आ जरूरत जाता है नहीं थोड़ा है, सा, पढ़ो, हाँ। मैं अपना शादी किया तुम लोग के भरोसे पे नहीं कर रही हूँ, मैंने But लड़का अपने you- भरोसे पे पटाया था, ठीक है तुम्हें जरूरत नहीं है। मेरा ये ईगो पे आ जाता है। You know what the पूरा। best part is? Manu is a manager. He can get the brands. He's a manager. He has the skills. See, unfortunately, he has many other artists. So ये उसकी खुद की शादी में ये ब्रांड्स लाने के लिए उसको टाइम नहीं है, क्योंकि उसको एक्चुअल पैसा भी कमाना है। That's true. That's true. उसकी भी शादी है, Yeah, उसका भी that's खर्चा true. है. Yeah, That's he's like true. कि मैं रियल मनी कमाऊंगा, ठीक है, फेक मनी later on we'll talk about it. But Fair, नहीं, fair. तो How did he propose, by the way? We Oh didn't ask yeah. that. Yeah. Oh yeah. My guy. Okay. Yeah. This guy, first of all. What a guy. उसका ऐसा था कि मैं मतलब प्रपोजल की तो बात ही नहीं कर रहा था वो। And I was like, this is one area where I'm like खर्चा होना चाहिए, ठीक है। I'm like, घर में Fair. देख लेंगे बात। yeah, fair. खर्चा। I was like कि कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, मैं इतनी भी लो की नहीं हूँ, ठीक है। Because I was like 3 years of relationship, I remain low की, मुझे इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, I don't need my guy to get me Gucci, ये वो ऐसा Yeah. कुछ नहीं। But I'm like, okay, this is a place where if you don't do anything, I'ma remember it for the rest of our Yes, life. yes. ठीक है? Yeah. उसको मैंने बता के रखा था एक्सपेक्टेशन कि देखो प्रपोजल तो करना पड़ेगा, and then he would always tease me कि but baby feminism तुम भी कर सकते हो। I'm like that's not what it means. So पूरा ये करके रखा था। So then one day Mariam called. Mariam, who's another comedian, she's not a comedian, she's a comedian's wife, but she's a very good friend of mine. She called and she's like, Urjita, important venting session करना है, let's meet. I was like, cool. So वो जाने ही नहीं दे रही है, बात ही किए जा रही है। And I was like कि okay, कितना मतलब हो गया वो क्या बस इतना क्या बुरा लग रहा है इसको, चल रहा है। And then फिर मनु का कॉल आया, कहाँ हो? And I said यही हो, अभी निकल रहे थोड़े टाइम में, मेरे लिए ये लेके आओ ना। I said okay fine. So then he's trying to buy time, Yeah. ठीक है। So then we reached our house, and then वहाँ पे मरियम उसको मैसेज करना भूल गई, उर्जिता is coming upstairs. Oh, great. तो मैंने की डाल के दरवाजा खोला और ऊपर ऐसे रेड बलून 2-3 दिखाई दिए, एंड आई इमीडिएटली अंडरस्टूड व्हाट्स हैपनिंग। हाँ, क्योंकि बर्थडे तो नहीं है, तो सरप्राइज पार्टी तो नहीं है ये. एग्जैक्टली, एंड इट वाज राइट लाइक अ डे बिफोर वी वर गोइंग टू दुबई फॉर द दुबई कॉमेडी yeah, फेस्टिवल। yeah. ठीक है, तो दरवाजा बंद हुआ, इज लाइक नहीं विवी व्हाट आर यू गोइंग, गो डाउनस्टेयर्स, गो गेट चॉकलेट फॉर मी, गो एंड देन मैं नीचे गई, स्टेयर्स पे वेट कर रही हूँ, फिर मैं ऊपर आई। Are there like butterflies in your stomach at this point? Like, Yeah. you know? I was like, I saw and I was like, But it's very funny कि वेट करो जा निकल यहाँ से 5 मिनट बाद चॉकलेट जा चॉकलेट लेके आ. ले गया, हाँ या। तो देन फिर फाइनली ही इज लाइक कम एंड देन फिर ऊपर दरवाज़ा खोला, एंड देन आई हैड जस्ट सीन ऊपर का, आई डिड नॉट सी नीचे का। भाई ने जो फूलों के पत्ते सारे रोज पेटल से उसने पूरा वे बनाया था, डिम लाइट्स किए थे, ही हैड
got in like some organization to make the decoration, पूरा Wow. बलून लटकाया दीवार पे ऊपर वगैरह हर जगह, then flower petals everywhere, photo frames लगाए उसने हम दोनों So के, मैं sweet. 3 क्या बोल रही हूँ मैं You, Manu and Mariam sir. फ्यूचर घर वो 3 photo frames तो उसने लगाए थे, and it was so romantic, and पूरा मैं चली, and then before going down anything she was like, give me your phone quickly. I gave him my phone. उसने वो कैमरा स्टैंड लगाया था because he needed 2 angles. Oh, And he just that's so had sweet, one dude. phone for one angle. so एंगल ले लेते sweet, सेफ dude. साइड के लिए एक बार That's amazing, man. Where this mic उर्जिता, where this mic, audio भी अच्छा आना चाहिए इसका. And I know he does that because I shot one brand reel with him. और वो यही करता है कि एक साइड से एंगल ले लेता है, Yeah, साइड yeah, फटाफट. Oh, well, that's very cute. So he did that, and he proposed to me, and then there was music playing in the background, my favorite music, and then इकलौता अंग्रेजी गाना जो मैं सुनती हूँ वो कौन सा? चलाया था उसने, क्या if the world was अच्छा. ending, वो वाला, ठीक I है, like how you वो took मेरा 5 favorite seconds था. एक गाना एक गाना. तो वो चालू था, and then फिर he started saying something and I started kissing him in the middle only because I was feeling so overwhelmed. वो he's like, baby let me finish. हाँ, बहुत लिखा है. पूरा मैं लिख के आया हूँ. So he proposed to me. I thought ये हो गया. तो दुबई गए हम. दुबई 1 हफ्ते का था हमारा ट्रिप, ठीक है. तो वहाँ पे भी डिड एवरीथिंग, राइड्स वगैरह पे हम गए, सब कुछ हुआ. दुबई कॉमेडी फेस्टिवल भी हुआ. आई टुक पार्ट इन क्या मतलब उन्होंने बुलाया था परफॉर्म करने के लिए. फिर इट वेंट वेल, थैंकफुली इट वेंट वेल, अदरवाइज मेरा मूड बहुत खराब होता. तो उसके बाद दैट नाइट, ओके, सो ऑल द कॉमेडियंस वर चिलिंग एंड मनु वाज कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी कि बेबी कल सनराइज देखने जाना है, तो चलो लेट्स गो टू स्लीप. एंड आई वाज लाइक अरे यार चिल कर रहे हैं, लास्ट डे, हाँ चिल करते हैं. एंड ही वाज लाइक सनराइज मिस हो जाएगा. आई वाज लाइक चिढ़ना यार, हमारी रूम से भी दिखता है इतना क्या है उसमें. एंड देन ही फाइनली, आई किड यू नॉट, ही हैड टू टेल मी मैंने पैसे भरे हैं. एंड देन आई वाज लाइक ओह पहले बोलना चाहिए था ना. And just got up. yeah, I was like, I don't care these guys. पैसे भरे तो मैं आऊँगी. So we went back home और सुबह 5 बजे उठ के ये उठा के बोला चलो टाइम फॉर सनराइज, कम ऑन. बिना नहाए गई वहाँ पे और मेरा सुबह सारा पफी हो जाता है, ठीक है. वहाँ पे गए, beach but like this vast expanse with like very nice white sand, like a dreamy place, okay. कोई नहीं था वो बीच पे, कुछ नहीं था. ये क्या किडनैप कर रहा है क्या मेरा, ये क्या है, किधर लेके आया है. हाँ मैं ये जोक कर रही हूँ, ठीक है, ये पूरा रोमांटिक मूड में, ठीक है. और मैं क्या बोलने जा रही है, कह रहे You still haven't realized what's happening? No, not happening. So then I saw, and then I saw from the distance this one big heart with like rose petals on it, और उस पे लिखा था will you marry me. And I looked at Manu and I was like, और किसका प्रपोजल हो रहा है यहाँ पे. No, then I knew, of course. Yeah, so we went over there and then this photographer was there, everything, art decorator वगैरह वो सब ने बना के रखा था. And I was like कि ऐसा ही रिसेप्शन करेगा, सस्ते में निपट जाएगा. ऐसे बीच पे हम गेस्ट को बुलाते 2 कुर्सी लगाएंगे, इसलिए कि बेबी ठंड लग रही फोटो खींचने. जो भी दुबई में है वो आ जाएंगे, खत्म, बाकी सब खत्म. मेरा उधर भी अलग जो भी लाइनअप है, those are my siders now. Come get me. Come. Amazing. He proposed twice, man. Yeah, that's proposal 2.2. Twice, That's so and then again sweet. he went down on his he proposed because he in his boy brain thought that घर वाला proposal बहुत ही low-key लग रहा था, तो शायद बड़ा वाला भी, because he wanted it to be like very nice and all, so इसलिए he proposed twice. And then And also इस बार you didn't know कि वो करने yeah, वाला this था. time I I think genuinely did not know what was going to happen. I think he wanted that also कि Yeah, एक बार yeah. पता ना चले. हाँ, I Yeah. think when you came early और तेरे को पता चल गया, that's when Yeah. कि एक बार तो एक वापस और करना बार पड़ेगा. होना चाहिए. I think Yeah. इस बार also if you knew he'd be like एक और बार करना, कितने बार मैं प्रपोज करूँ अब 3री बार यूरोप चलते हैं, अब यूरोप में भी वापस एक और बार प्रपोज. इसने और एक बार हाँ बोला हमारी मुस्लिम शादी हो जाएगी. बस प्रपोज ही किया जा रहा है 2 साल and you keep knowing. Yeah. I would ask you this, जब first time उसने propose किया घर पे और सारे रोज पेटल नीचे डाले फ्लोर पे, ये वो, the next day साफ कैसे किया वो इतना सब कुछ? Oh, the thing is Open because company. I'll tell you what happened. So because we were leaving the next day, we didn't clean, and so 2 of our friends were going to stay 2 days later because they had some work in Bandra. So they're also a couple, ठीक है? So Manu sent that guy a message right before he could enter the house. Oh bro, by the way, just saying,
there's a lot of proposal stuff over there, so she shouldn't get the wrong idea. so then उसने already इसको बोल कर रखा अंदर बहुत फूल है तो हमारी रही है ना, ठीक है उनके थे. That'd be funny. Will you marry me, Urjita? Like, I'm not Urjita. no idea. ये किसके लिए है? नहीं यार, sorry. Very funny. Okay, let's get into your products. Yeah. Okay, क्या so लेके आई the है? first one. Is my venue. Is my wedding venue here. Okay, now this one is a very cute top. Hey. So it looks very cute, except that ये एक तो बहुत लंबी साइज है इसकी. So it's like it's too short to be a one piece. ये लंबा नहीं है, तू छोटी है. This is very short. What are But you it's, talking about? the thing is, it's too long to be a top, but it's too short to be a one piece. So I'm like मैं इसको as a top पहन रही हूँ तो अजीब दिख रहा है, and इसको इन भी नहीं कर सकते. So ये लेते टाइम बहुत क्यूट लगा था. ये अभी दिखने में भी बहुत क्यूट लग दिखने रहा में है. बहुत क्यूट है, but this I'm like ये थोड़ा और बड़ा होता ना, फ्रॉक बन जाता बढ़िया. But ये These are like guys when they were 3/4. ये shorts भी नहीं है, pants भी नहीं है, ये क्या है? ये बीच में 3/4. तो इसको ऐसा आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट मैं इसका ना काट के हैंकी बनाऊंगी. तो बेचारी ड्रेस. अरे बेचारी. You know what? You know what? Disrespectful to the dress. Actually ये hanky अच्छा लगेगा ये. फूलों वाला और हैंकी. बहुत सारे हैंकी बन जाएंगे तो हमें भी दे देना एक एक. या ये- तुम लोग कभी भेजूंगी 2 ये पीछे लगाने के लिए. ये अच्छा हैंकी बनेगा. यही ऐसे वाले रहते हैं But if हैंकी. you really like the dress, you हाँ. could get it altered in the sense like Yeah. shortened or something, right? Actually, That's a good question. that's a yeah. That I never think- crossed your mind? I think What are you saying? I think Are you Urjita, serious? What tailors exist, dude? but if you just keep washing this ना washing machine में shrink हो जाएगा तो फिर ये टॉप बन जाएगा खुद That's से. true. ये Zara का नहीं ना but. अरे fuck Zara H&M का ही होता है ये. Yeah, yeah, ये Also, ये shrinking तो- doesn't happen one direction; it happens everywhere. Dude, That's how shrinking works. no. I had an What the oversized. hell, dude? I'm telling you, it Okay. happens. Yeah, it does. I'm telling you, it What? happens in one direction. H&M का मेरा एक oversized T-shirt था. एक बार वॉश किया मैं. बस यहाँ से छोटा हो गया इतना क्रॉप टॉप जैसा और यहाँ से इतना लंबा हाँ? बड़ा. अरे ये क्या है? हुआ है How is ऐसा? that even possible? हाँ, अरे ये अब तो मैं वही- क्या झूठ बोलूंगा कि इसके वजह हो गया ये. I think किसी ने switch कर दिया तेरा वो टी-शर्ट क्योंकि मेरे Yeah. क्या वॉशिंग मशीन के Yeah. अंदर मैं मैं भी जो H&M अकेला Zara रहता पहनता हूँ. मेरा कभी shrink नहीं हुआ. क्या मेरी बिल्ली ने किया है क्या? कौन है मेरे घर पे? मैं ही तो Scratched रहता it हूँ. out. God knows. That's a bizarre way. Why would I lie about this? Bizarre This way. happened. Yeah, I don't think Crop you top lie. बन गया, that's an Yeah. अरे yes, that was an yes, yes. exaggeration, अच्छा, but it okay, was okay. too But small. it's- Like I oh. couldn't wear it anymore क्योंकि यहाँ से Yeah. इतना लंबा है Yeah, मेरा yeah, शोल्डर yeah. ये सब. But यहाँ से इतना ही है. It looked horrible. So it could happen. Is all I'm Yeah, saying. okay. करके देख ले. So you can try it. Washing machine or tailoring. No, decide. why don't you try wearing this? शायद तेरे घर में हो ये सब चीजें. मेरे वॉशिंग मशीन का प्रॉब्लम है क्या ये? I think दे मैं करके दिखाते हैं हो जाएगा. और लोग खरीदे हुए घर. Side business, dude. ये क्या अजीब जेलसी निकल गया तेरे मुंह से. खरीदे हुए. और खरीदो यार. सॉरी मैंने नहीं खरीदा था. ओ फिर तो और बाप का घर भी है. और मैं माँ बाप के घर में ये है तेरा कारवा भाई. अरे मैं तो रेंट बचाने जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ वहाँ पर और कुछ नहीं है. Lava, you have 2 things that Oshang and I don't have. तू ही तो as a father also. 3 That's things I don't have. She said that only. I meant that only. No, I thought 2 तेरे पास तो है ना. क्या पापा है बट घर नहीं है ना घर पापा नहीं है. का. हाँ. मेरे पास घर पापा दोनों नहीं है. अरे सॉरी यार गाइस, मैं क्या करूँ अभी. तेरे पास श्रंक टॉप भी मैं है. वही बोलने वाला था. मेरा वॉशिंग मशीन तो तुम लोग से गंदा है. तुम लोग के पास बेटर वॉशिंग मशीन मेरा है. shrink तो नहीं हो रहा. But I'll take a dad over shrinking clothes for sure. Oh god. Or in this economy, a house also will be fine actually. Yeah. Keep dad, give the house. मैं इंस्टाग्राम पे कोई फोटो डालूंगी, गाइस आई बॉट दिस अमेजिंग टॉप फॉर मी फ्रॉम ज़ारा एंड व्हाटएवर, एंड पीपल विल कमेंट कि ओह पर घर का क्या हुआ. घर खरीदा क्या. इस एपिसोड के बाद से यही होने वाला है. वही होने वाला है. तू कुछ भी खरीदा. घर का घर क्या? खरीदा घर क्या? नहीं लेगी. घर क्यों नहीं खरीदा है तूने अभी? मेरे आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आई विल बी लाइक लोधा यू वांट टू स्पॉन्सर. बार्टर कोलैब कर सकते Such a हैं हम. But you know, I keep trying to think about moving towards अंधेरी के साइड. तो वो घर बेचना पड़ेगा, नया लेना पड़ेगा. Yeah.
उसी में मेरी गांड फट गई है Yeah. तो आई डोंट नो व्हाई नहीं हाउ यहाँ यू पे लेने में कोई पॉइंट ही नहीं है इट्स लाइक नहीं अंधेरी भी चलेगा मैं वहां तक पहुंच यहाँ गया हूँ तो नहीं। so I just follow a lot of real estate agents on Instagram same. it's a lot of fun dude to watch those houses it's so much fun to watch those houses Those guys are also very good at showing you all the rooms Yeah. and making even the shittiest house look like Yeah. look like yeah extravagant. they just like यहाँ से view ये इसका ये I'm like fuck मेरा view तो ये नहीं है मेरे को मेरा view तो यही होना चाहिए अंधेरी कुछ नहीं खरीदूंगा but I understand the घर खरीदने का appeal ना it's just very exciting because to be like now my thing is I also follow all those accounts and मेरा ऐसा हो गया कि now at this point if a reel just starts the way the guy is talking and the way the guy is dressed up the way the guy is describing the house I can just tell कौन से area के घर के बाद होने वाली है like if the figure is 35 like Virar yeah if, for sure if don't the really figure is not even mentioned Bandra ठीक है yeah sometimes they show the house and I'm like सही घर है कहीं मेंशन नहीं होता डिस्क्रिप्शन में कहीं नीचे हाँ। लिखा रहता है 14 करोड़ I'm like, yeah भाई बताया करना है यार मेरे को अच्छा लगा था वो 14 करोड़ yeah and then in some cases they're like for price DM yeah yeah मैं क्यों करूँ डीएम ऐसे पराये मर्द को डीएम करना अलाउड नहीं है मैं क्यों करूँ डीएम हाँ भाई साहब आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या और ये पब्लिकली यार लाइक हे डीएम एक बार इन वन ऑफ दीज रील्स यही सेम फॉर प्राइस डीएम लिखा हुआ था एंड सॉरी फॉर प्राइस कमेंट लिखा हुआ था तो मैंने कमेंट किया क्या क्या कहूँ हाँ कि हे इंटरेस्टेड या कुछ से किया था एंड देन रिप्लाई आया था डीएम ठीक है यूजुअली मैं ये करता हूँ एंड आई इमीडिएटली डिलीट द कमेंट द सेकंड आई गेट अ Oh, yeah, that कि also, खत्म हाँ, वहाँ पे मेरे को yeah, इनका yeah, एक बार मैं भूल गया तो शाद another comedian he sent me a screenshot being like ha 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 hey, look at this and I was like oh shit and then I was like अरे मैं बस देख रहा था and he was like oh I thought you were joking I was like no I'm just looking for houses dude I don't know what to and I was like ये publicly नहीं जानना चाहिए था लोगों ऐसे को Then automatically changes the perception. Yeah. Now Shaz is like, oh, Govind is looking for a house. Yeah, अरे नहीं and also मैं बस random interested hey DM please ये से क्या है ये It just looks so weird. और ये ऐसे कमेंट वही दोस्त लोग देखते हैं जो सबसे हरामी और सबसे गरीब रहते हैं हाँ। साले तू खुद नहीं खरीद सकता तू मुझे बता आई डोंट नो अबाउट शाद मैं शाद You're on point. अरे नहीं मैं भी नहीं खरीद सकता मैं बस देख रहा हूँ कि अच्छा कभी ना कभी कुछ मिल Yeah, जाए no, जो of course, and there's nothing wrong with because it's like, see, I'll tell you. मेरा दिमाग में एक सेट हो गया कि चलो आगे जाके सपोज अगर नहीं भी ले पाई मैं घर क्या हो जाएगा एटलीस्ट पैसे तो सेव है ना तो Yeah. उनका मैं कुछ और ही कर लूंगी Exactly. And but you need it's to know how much it is for even if you Exactly. plan on buying. exactly Dude, yeah. a big this type of video will show up on your YouTube feed I'm sure often where they're like millennials will never be able to afford a flat Yeah. or this is the worst time to worst generation to be able to afford a flat or Yeah. that kind of shit and then that plays on your mind like fuck I'll never afford a flat what कभी नहीं देखता वो video भाई. yeah that's what Yeah. they fuck you up man Yeah. exactly I love your Buying cars solution and to it मैं तो नहीं देख रहा Yeah. वीडियो हाँ, मुझे पता है can't. Not like मैं क्या देखूं I'll own that I'll mom own. I'll want that dad I'll make you proud मैं तो देखता ही नहीं वीडियो वीडियो मैंने उसको ब्लॉक ही कर दिया है Not खत्म। interested. मैंने ऐड पूरी देखी वीडियो स्किप किया That guy will be able to buy a flat because उसके ad revenue आ रही है yeah He'll be able to buy a flat हमारे ad revenue से I love how अंतरिक्ष इतना पैशनेटली बोल रहा है कि ये सारा ऐसे देसे वीडियो देखते हैं फिर इतना बुरा लगता है मैं तो देखता ही नहीं बेकार है यार नहीं नहीं it's too much that is dude. addressing the problem at the root Dude, any flat that looks affordable in one of these videos I look at the view it's just another building and I'm like this is why you're cheap dude it's just another building का Yeah. view Dude, another thing, sorry, I'll just add to what you said. Yeah. तो ऐसे videos usually मैं देखे US के content creators बहुत बनाते हैं. Sure, yeah. So I look at that, I get very depressed. But then I also convince myself, हाँ इनके बच्चे तो बर्गरों में पैसे वेस्ट कर रहे हैं. it's okay dude हम जंबो की खा रहे हैं हम लोग वो सब unhealthy है हमारे वाले कर लेंगे आप अपने वालों का देख लो. हमारे वाले भी कुछ खास नहीं है. वैसे हम भी बर्गर ही खा रहे हैं और वो लोग बेचारे US डॉलर्स में कमा रहे हैं हम लोग बेचारे मैं कभी कभी कमा के जिलाटो खा रहा हूँ.
वो लोग का लाइफ बेटर चल रहा है एक्चुअली. नहीं तो पता नहीं है वो चीते रे वो. Those millennials can't afford. You're also ये भी बोल रहा not interested to the video. You're also being delusional कि नहीं वो लोग कभी करना ही अलग अलग तरह के दिल में और रोशांग अलग अलग तरह के डिल्यूशनल है. रिसेंटली शेट्टी ने एक वीडियो डाला था जिसमें वो एक घर कोई तो जो जिस तरह के वो वीडियो बनाता है ना कि दे शो घर दिखा रहा है कोई तो रियल एस्टेट ब्रोकर एंड देन शेट्टी कम्स इन. सो द हाउस दिस गाय इज शोइंग इज माय फ्रेंड्स हाउस. His rich friend's house. Wow. You know Navkar and then we have told you about उनकी शादी में Yeah, गया yeah, था. of course, yeah. तो वो उनका घर है. I'm gonna record an episode with Chetty in that house now. That's Dude, hilarious. that balcony He's is showing the balcony. And Yeah. I was in that balcony when I saw the reel. But why was the guy in there in your No, he friend's was house? like one of the houses in नहीं that नहीं building. not in the friend's house, the building, The another building. house. Okay, okay, okay. Like Yeah, because I same was like तेरे दोस्त को क्या Yeah, हुआ? I thought, why is selling the तेरे house? दोस्त ने भी पैसे सट्टे Yeah. में गो That's गवा दिए. exactly. What if your friends didn't know? They looked out the balcony. This guy is like, ये घर है. ये वो गोल्ड प्लेट जिसमें आलमंड खा सकते हो आप. 4 करोड़ आप खरीदिए. ये 2 जन नहीं आएंगे उसके साथ अंदर जो रूम में बैठे हुए हैं. और ऊपर से 20,000 डालोगे तो इनको भी पैक कर देंगे. Do you have another product? I do. I'm just trying to. It's okay, आराम से. A nice bag. Oh great. wow, Hey, Mokobara that's a bag. product, Nice. Yes. See what I told you? I knew at some point Mokobara आने वाला है. Mokobara. Mokobara has become like a secret already, like sponsory, because we keep talking about them every. Oh yeah, like अपने इसमें हाँ. बट ये Mokobara मुझे बहुत मेरे आता बॉयफ्रेंड है. ने गिफ्ट किया है क्योंकि मैं अपने पैसे से कभी नहीं खरीदती इतना महंगा. Are you hiding But- it or showing it? Oh, I'm showing it. Sorry. ऐसे भी है? Next one. This is a दिया. ऐसे इसके और 17 वेरिएंट्स हमारे घर पे है अभी. ये दिया. Electronic दिया. So I'll tell you इसमें क्या होता है ना, इसमें पानी डालो तो ये चमकता है. तो I don't know. तो I don't know if it will still work, but we can try. If नींबू पानी डाला तो होता है. Which, by the way, we didn't mention the Nimbu Pani. I got Urjita. This is Urjita's only guest who has asked for Nimbu Pani on the show. First of all, अरे ठीक है यार. अरे मैं I तो- don't- ये क्या which is भाई? good. Like because it's I don't new. drink soft drinks and all, तो ठीक इसलिए है, मैं refreshing. yeah, It's yeah. refreshing. So somebody asked not coffee or chai, Yeah. but Nimbu I Pani. don't drink that also now. तू कॉफी चाय भी छोड़ दिया Coffee तूने? भी नहीं, मैं चाय भी नहीं. पीती नहीं थी, but in general like I'm on the diet, so I'm avoiding carbonated okay. junk and Yeah. everything, tea, But for coffee. Yeah. Urjita, I saw we it in got- your story. Yeah, And then immediately after you were like, कोई sweet बताओ ना, ऐसा कुछ ऐसा sugary sweet हो तो. Because I'm like, खाना है तो अच्छा ही खाना है फिर अगर ऐसे cheat में कुछ करना है तो. हाँ, but we Yeah. got a international Italian lemon for Urjita. Yeah. Here. हाँ, but रुक जा, पानी दे दो भाई. And then mix it with rajma masala. You didn't. Oh, पीछे पानी. पानी. There's a bottle next to you also. Oh yeah, shit. Done. We are actually going to try. तो ये Flipkart से सस्ते में मंगाया था. तो अभी देखते तो हैं. ये लाइट जलती है जब हाँ, तो लास्ट पानी दिवाली डालते वी हैं. हैड अ पार्टी एट अ प्लेस, हाउस पार्टी हमने रखा था, तो उसमें तब तक तो जल रहे थे. करंट तो नहीं आएगा ना? हाँ नहीं, आएगा, current आएगा. नहीं, नहीं ऐसा मत बोल. Of course. आ रहा है नहीं. मतलब क्या चमकता है? So the light वो Oh. चमकता है. So it's like water energy. need Like to- how is it doing this? I don't Yeah, know. I see 2 screws. Is there like a turbine inside? I really don't know, but it Yeah, what worked is that? during the Huh? Diwali Turbine party. क्या अच्छा वो windmill जैसा? अरे वो स्वदेश देखिए स्वदेश. हाँ हाँ. Oh yeah, got it it. worked twice. That's all I know. It worked You know? Diwali और एक In event post पे. we'll add a light here. Hey, wow, it's working. Alright, nice. अगर घर का लाइट चला गया, like shit यही दिया बचे हैं, सब में पानी डालो जल्दी, दिख नहीं रहा है कहाँ पर है. Yeah. वो भी नहीं कर Has पाएंगे. it worked? Is It it has worked, it instantaneous? has Is worked, it but- instantaneous or I does it take some time? I think it will take some time. I'm not sure. Okay. but रख ले we will नीचे. keep it हाँ, नीचे. वहाँ डाल दे. नहीं यहीं पर. Because it's been very long since we bought this. See, बादशाह में देख लेंगे कभी जला तो. 90% नहीं चलेगा ये, but चला तो wow. But wait, this you got for Diwali? Yeah, we got for Diwali because I was like कि real दिए के लिए वो सब कुछ लेना पड़ेगा. हाँ, ऑयल डालना Oil पड़ता and है, everything. wick लेनी पड़ती है हाँ, अलग वो से. yeah. इलेक्ट्रिक वाला आता है जो बस बटन से वो Oh. light But this is on cooler, होता ना? You put water, so ऐसा Yeah. लगता है कि तुम कुछ कर भी रहे हो है. That's इसमें. true, that's Like, true. Yeah. Instead of putting oil, you're putting water. Yes. And from afar it looks like oil in the diya. Yeah. Yeah, It's that's And- what. and- yeah, और ये दिया से दूसरे दिया बुझा सकते हैं. That is so good. That is so good. I don't, you can't do that. That's great. Normally हाँ जलाते हैं. Yeah. This is the only one. दूसरे दिया बुझाते हो.
नाइस नाइस जल तो नहीं रहा है वैसे। दिस इज द गैंगस्टर दिया ना, ये दूसरे के दिए बुझाता है. I like that it's there and it's already taller than Peter Dinklage. It looks like अरे बेचारा 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 Peter Dinklage. यार ठीक है, बोलने कम से कम डायरेक्टली इंसल्ट तो मत कर. ठीक है, बाकी 17 चलते रहेंगे शायद. Yeah. Yeah, but okay, we get the idea behind it. This is cool if it Yeah. worked. Yes. Has it like you've used all of them in Diwali during Diwali? Yes, yes, all of them हर जगह लगाए. This is what Manu used to propose. The house is full of water गिर रहा Not है. candles or anything. diye lagaya So Antariksh, she was just jealous because you don't have a guy like Yeah, me. actually, Yeah, you know sure. what? Ask, how did you propose? I almost didn't. That's, yeah. It's a long story. There's a whole episode. Fans of the show You know. didn't propose because already लफड़ा चल रहा था, तो you thought you already पटी हुई है. That's what you thought, That's no? definitely part of it. This is what you 100%. thought, no? पूछने की क्या 100%. जरूरत है वाला. 100%. Yeah, she's like, yeah. You're like, yeah, and yeah, and we got married. देखा? A lot of yeses. A lot of yeses. Steady था. लड़कियों, Yeah. इससे The हमने thing क्या is- सीखा? लफड़ा Yeah. करो, सोच समझ के करो, Yes. ठीक है? Yeah, I knew what her answer was going to be. Unlike, okay. I mean, वो उसका भी He हमेशा very- I'm joking, I'm I joking. पता think था. everyone knew. Of course. Manu made up for him not proposing. Yeah, दो बार twice. कर दो दिया बार. Manu को. Hey, can I Yeah, claim भाई. that? One of those दो is my बार. story now. तो दुबई वाला ले Dubai ले. वाला, yeah. Depending on the situation, जहाँ पे अच्छी better fit हो रही हो. But I'll tell you the last thing I have. Yeah, Okay, please, last please, thing. please, please. वो जला के I- देख ले. चलेगा कैसे? नहीं वो भी है. Last thing that I have, I'm Yes, wearing yes. it. Oh. It's, so you think this is a top? It's not a top. It's a one piece. Oh, This is a Yeah, dress? This is a one piece inside, but I bought this when I was very skinny and very hot. But now I'm just hot. I'll tell you what happened. तो उसके ये बहुत tight है. तो क्या होता है ना, इसमें कोई भी पहनेगा ना, if you also wear it, you look 1 month pregnant. oh, it's that. So is the yeah. So it's body no hugging matter पूरा. how hard I tried, Yeah. I couldn't like. You know वो पेट अंदर ही नहीं जा रहा था, and I don't like wearing the corset and Correct, everything. correct, It correct. restricts my whatever. So I was like, you know what? इतना बढ़िया, इतना महंगा लिया था, क्या करे? So I was like, you know what? What if? I और just तो बोल रहे तेरे को aesthetic नहीं है. दूसरे Yeah. वाले के साथ भी वही कर लेना वो. वो उसमें फिट नहीं आ रहा है. अच्छा, वो okay. pimping हो रहा है हाँ, उसका. also ये थोड़ी skinny है तो ये अच्छे से Yeah. skin पे fit हाँ. हो रही है. वो वाली ऐसे बस. अच्छा, Yes. It's हाँ. more like a flowery, sunflowery So- dress. And this Yeah. looks like a top also, like proper. Yes, I couldn't yeah. tell. It's I a proper thought this yeah, was a इधर top. तक आता है भाई. ये पूरा. क्या? Yeah. तो कैसे पहना है तूने? ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है. You look like Prabhu Deva about to dance right now. turtleneck लेके. But उर्जिता बहुत गर्मी नहीं है बाहर. क्या? Turtleneck के लिए? I know, but I wore this just to make a point. Oh, well done, well done, Just well to- Now I'll done. definitely keep it in the show. I Yeah, promise. of course. Well done, I am well like, this done. is one thing, is one invention I was super proud This is of. very cool. Actually, I'm very समझ नहीं proud. आता कि ये You have पूरा- aesthetics. है ना? Yeah. You have ये the पूरा one piece. eye for it. ये Yeah. पूरा वन पीस तो तो बिल्कुल one समझ piece नहीं That's आता. top भाई. crazy. And ये समझ में नहीं आता कि one piece है. Yes, So I was like, you know what? absolutely. This was Yeah. made to be a top. I अच्छा was- turtleneck लग रहा है Yeah, ये. है ना? Nice, Okay, nice. Antariksh, Nice. final segment. What do you got? Yes. Uchita, final segment. Yeah. We haven't played this game in a while. This is basically I will name a very expensive item. Some celebrity has bought this item. Okay, I'll give you 4 options. All 3 of you will be playing. I'll give you options as to who bought it, and you guys have to deduce who it could be. Okay. Let's go. Yeah. First one. This is right on point for this episode because the first one is this celebrity spent $100 million on gold plating almost everything in their private jet. In their private Taylor jet. Swift. No. That's definitely one of the options. हाँ. Oh, Yeah, no, but you're giving she options. travels a Sorry, lot sorry, in sorry, jets, so yeah. you're good. Yeah. That's a good. एक Yes. तो पूरा प्राइवेट जेट है. ऊपर से ऊपर अंदर से हाँ. gold plated. So प्राइवेट जेट है तो फिर अंदर इतना खर्चा क्यों करना पागल है? how will you show you're rich? प्राइवेट जेट Yeah. is enough. Exactly. मेरा प्राइवेट जेट हो, मैं अंदर पर्दे लगाऊं, तेरे को क्या है? गोल्ड वोल्ड क्या क्यों लगाऊं So मैं? हाँ. the options are A. Michael Jordan, B. Donald Trump, C. Jay-Z, or D. Taylor Swift. Jay-Z, I think. Okay, I said Donald Jay-Z. Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Why Trump. would you? Who do you think is Huh. more
inclined towards Donald doing those Trump. kinds of displays or Donald यार मेरा Trump, ऐसा आई Donald थिंक Trump. ये रैपर लोग एड़े रहते हैं ये लोग हाँ, को रहते बहुत तो हैं. रैपर लोग को इट इज Yeah. समथिंग इन कॉमन आई हैव नोटिस्ड इन बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन रैपर्स इज उनका ऐसा है कि बस दिखाना है कि हम अमीर बहुत Yeah, हैं yeah. That's a so the good point. gold and everything so I'm guessing Jay-Z I don't think Jay-Z just because he's like more of a rags to riches story तो उसको थोड़ी पैसे की वैल्यू पता है कोकेन बेचता था Actually भाई हाँ वो. उसका नहीं मगर उसके एक गाने में Yeah, yeah. I don't know if you've He heard it. invests There's a money. song Jay-Z ka where it's the song's about investing money. Yeah, He's yeah. like, I bought this art piece for 1 million. Now it's 4 million. 2 years later it was 3 million. 5 years later it'll be 8 million. I'm like, अबे ये गाना सुन क्यों रहा हूँ मैं? By इसके the time I give it to investment my kids, it'll be 15 million. That's a song. अरे मैं इसका So, investment yeah, क्यों this- सुन रहा हूँ भाई beat this, पे? this plane is definitely worth more after the gold plating. Let's be honest. 5 years later is 75 million. नहीं, but I'm going with Donald Trump. You're going to Yeah, Donald Trump. same, Both of you are going to same. Donald Trump. You're going to Jay-Z. Jay-Z, Jay-Z. yeah. The correct answer is Donald Trump is Yeah, right. yeah. Yeah, that's exactly right. Wow. If you This look is at any Trump tower, उसमें भी ऐसा Gold. gold You're दिखता है थोड़ा exactly सा. right. That's why I said बाहर this. के ट्रम्प टावर के इंडिया के ट्रम्प टावर में भी गोल्ड है हर वही जगह. तो. यार मुझे अब समझ आ रहा है हमारा वाला बंदा कहाँ से इंस्पिरेशन ले रहा है उसको लग रहा है कि वो इतना कर रहे हैं हम उतना तो कर हम ही नहीं पीछे रहे रहेंगे क्या ओए? My gold will be in my clothes. So wait, this is when he was doing apprentice or ये सब Dude, ना? no. Then? This is he used this. So once you are elected president, you go with Air Force One. Yeah, of Correct. course. They call this one Trump Force One. Okay, Ah. that's the unofficial name for this aircraft. Wow. And throughout his campaigning, Yeah. he used this. So he's still like a regular user of Oh, he Trump still Force owns One. this? Yeah, Like, it's yeah, still he his? owns- Yeah, still his. Wow, he Oh. kept Well, telling everyone कि he's rich. the man for the Okay. people while being in a gold-plated private jet. Dude, Yeah. you know, it's so funny you say that because Thank you. I yeah, it's good. You're welcome. Man. Yeah, okay, man. It is funny that I said that. So a lot of these I got from this one video that I saw. He was basically the entire video was first saying how much the celebrity spent Yeah. on whatever item and then demeaning them for spending that. People are dying in fucking Africa and you are spending, people are dying of world hunger and you want to buy a fucking $50 million dog house for your dog. Fucking Dude, asshole. no wonder you got millennials can't buy a house in this generation because you're watching these videos. Ki what are people spending on? Yeah. My algorithm is so confused. Like, what is happening? इसके पास Can you पैसे afford है it? कि Can you नहीं not? है? But on the contrary, I think as a politician, if I was a politician, Yeah. I would also like buy a lot of expensive stuff for myself Yeah. just to remind myself to work hard वरना ये जाएगा. Exactly. True. That's true. Yeah. But they have businesses now on the side. On the Not side, all नहीं. of them. Yeah. Like Donald हाँ. Trump तो already businessman था and then he Yeah. got into Yeah, politics. yeah, yeah. Some just Yeah. start from वो that. WWE में भी था तो वो तो अलग ही कर रहा है पता Yeah. नहीं. Do you have वो तो- Next, another yeah, one? I'm more. Yeah. This celebrity spent $2.1 million on acquiring their comic book collection. Okay? Their Their comic own. book collection. Yeah, so basically. अच्छा Acquiring- No, there's Acquiring more a- story to it. Basically, Acquiring what or happened? creating? Okay, sorry. This celebrity spent $2.1 million on acquiring their comic book collection. Basically, what happened? Apparently, this celebrity had a huge comic book collection. Okay, then they used to throw a lot of parties, a lot of parties. Turned out, he found out of I said he but he found out That's a few okay. months later that 3 of his most valuable comic books have been stolen. Which comic books were they? First, it was Action Comics 1, which is Superman's yeah, first number appearance. one appearance, yeah. Then it's Detective Comics number 27, which is Batman's first appearance ever. Okay. महंगे महंगे Bought हाँ, like हाँ, each of बहुत these will be like valuable. 800,000 to a million, Easy. maybe Yeah. even Oh, each of these. wow. Million, Yeah. Huh. So maybe he has like just 2 books. That's his comic book collection of $2 That's million. an insane Yeah. collection still, Yeah. So the options are which of these celebrities? A. Brad Pitt. B. Nicolas Cage. C. Seth Rogen. D. Snoop Dogg. Nicolas Cage. Okay, you're saying Nicolas Cage? I know the story, that's why. Thanks. Nicolas Cage. Nicholas Cage. I think मुझे ऐसा लग रहा है Nicholas Cage होगा. मुझे ऐसे लग रहा है कि Nicholas Cage होगा. Oshak is the worst in competition gay. I'm going with Seth Rogen. Let's just for the sake of Seth Rogen. It's Nicolas Cage! Oh, shit! I was Are so you close. serious? Fuck, I got it right! I was so My close. first correct answer.
निकोलस केज वो गोस्ट राइडर वाला ही है हाँ, ना? वही, वही, Yeah, वही, correct, वही, correct. वही. I had a problem. Like we used to have Nicolas Cage का photo यहाँ पे because he was so bad at spending money. गोस्ट राइडर 3 में सर के साथ गांड भी चल रही है इसकी. ये रहा. Oh wow. इसने It's बहुत a अतरंगी spending चीजें item. खरीदी है भाई. इसने Wow. fossil खरीदा था literally. He What the bought these So boats. the story of that he bought a T-Rex skull, okay, an actual T-Rex skull he bought, Huh. and he bought it for like some like $300,000. Yeah. But the thing is, every article that mentions this also mentions that it's not just that he spent this much money on that. Yeah. It's that he almost broke his friendship with Leonardo DiCaprio, who he outbid. Oh. Yeah. To buy that, Yeah. And on top of that, Thing. this is illegal to own, so you have to give it back. You have to give it He back. spent the money, didn't get the money That's- back, and that had to give it to also. the museum, and went bankrupt over this. Bankrupt चला गया भाई वो. So also something crazy about more than follow up to this Yeah. comic book collection of Yeah. his. So his 3 most valuable ones got stolen. The Yeah. the The director books, comic yeah. one, the action comic one. Years later, on an episode of Storage Wars, it was found in a storage No, locker. I Action love Comics that show, one. by the way. I that show. love I Storage Wars. It is Storage awesome. स्टोरेज Wars वॉर में क्या मैं होता बताता है हूँ. क्या होता है? exactly? कनाडा का है ना ये. I हाँ, think तो कनाडा में बेसिकली अच्छा, ये लॉकर स्टोरेजेस नहीं होते which you just buy when you हाँ, keep हाँ, stuff. हाँ. तो Yeah. बहुत टाइम बाद if you stop paying rent, the places own those storages, so they can Okay. auction it off. Like a bank only. And you'll Right, find kinda like a crazy bank. things. Yeah. You find So amazing, they rare things. Collect a group of people वहाँ पे जाते हैं. They just show they open the shutter और वो सब कुछ पैक रहता है. They just show you ऊपर से कि ये है. They shut it back. अब तुम auction करो depending on तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ से क्या निकलेगा. Yeah. Oh dude, so cool. So sometimes you'll see एक बाइक Damn पड़ी good. हुई है. बोला अच्छा ठीक है तो अगर बाइक है तो इसके हिसाब से और भी महंगी चीजें हो सकती है. Maybe इसके अंदर ये निकलेगा. So just on the basis of vibes you auction and if you win you win. Wow. So I'll tell you something crazy over then. There's Storage Wars, which is storage unit. Yeah. There is also a spin-off of the show called Container Wars. Oh, this I don't Shipping know. containers. Are you Entire shipping serious? containers who people have not claimed. They couldn't buy, pass customs or something. People now bid on 100,000 items of like toothbrushes or something. I don't know. But that's Container Wars. I'm gonna binge that This is tonight. crazy. I love Storage Wars. I think it's on Netflix also. I'll watch बहुत it. बढ़िया This is show very है. nice, dude. It's very good. और ये मैं देखने वाला हूँ Container Right. Wars. Yeah. Fuck, Anyway, amazing. Seth Rogen. That's my answer. But okay. Yeah. Shout out Seth Rogen. मैं जिसने सेथ रोगन की मूवीज देखे हैं मेरे को नहीं मालूम है कि कनाडा के शो देख रहे हैं यार. मुझे एवरी टाइम आई मीट होशांग सो वी आर द सेम एज, द एग्जैक्ट सेम एज. आई स्टिल फील ये मुझसे ज्यादा यंग है यार. इसको ऐसे कैसे मैं अभी मैंने जरा ब्रिटिश शोज देखना चालू किया और ये कनाडा का पोर्शन लेके आया है यार. हर बार ऐसा करते हैं होशांग तो. Hey, that's the end of the That's the end episode. of the man. episode. Yeah, man. Thank you so Yeah, much for this was coming, so much Urjita. fun, man. Do you Yay. want to plug something like your wedding? Arre. Brands that Actually, can sponsor. not my wedding, don't come please. Venue वगैरह नहीं बता रही, but no, anyway, I have to. Okay, when will this release? This In a coming week. Sunday. This coming Yeah. Sunday. Oh, you guys are fast. Yeah. Yeah. Fast, or we just don't have a Fast, Bank, yeah, huh? exactly. It's called having no other option. नहीं सही है. मैं I think तब तक I think Pretty Good Roast Show I am there in one of the episodes if you guys can. It's not like I am the reason why it will. hey, get hey, views. man, make it so. But Make it so. it's more like हम मैं तो भी उसीलिए हूँ. देख रहे हैं. Like मैं भी हूँ. Yeah. मैं भी हूँ उसमें. हम तो ठीक है. उर्जिता के लिए देखेंगे भाई. मैं तो मतलब मैं ब्लॉक ही कर रहा हूँ बाकी सब लोग को. Instagram से भी ब्लॉक कर. Yes, you tell आशीष ये फॉक ऑफ उर्जिता को बुला. मैं तो चैप्टर में जाके इससे तेरे नाम पे जाऊंगा बस. This is a true Yeah. friendship. Yeah. तो प्लीज वो आ रहा है एंड जुलाई और अगस्त में अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज मेरा न्यू स्टैंड अप वीडियो भी आया होगा, वो भी जाके देखो. इट विल बी अबाउट माय बॉयफ्रेंड हु विल देन बी माय हस्बैंड. बट या एंड इफ यू आर अ न्यू पर्सन वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, गाइस मेरे भी 3 वीडियोस है ऑलरेडी, स्टैंड अप वीडियोस है, वो देख लो. मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ. थैंक यू सो मच. लव यू. Thank you so much Also, for coming. if you Congratulations, if Yeah, yes, if thank you you. watched until this point, just type hashtag. ये सोचना चाहिए था पहले मेरे को. हैशटैग उर्जिता ने घर लिया क्या? ये बहुत लंबा हो गया. नहीं, सही है, सही है. नहीं बहुत लंबा हो लंबा गया. हैशटैग उर्जिता घर. ठीक है. Hashtag Urjita Ghar, just leave that in the comment. We are blatantly stealing this from Chalchitra Talks because he told us to do it last week. Yeah. तो हम हर episode में करने वाले हैं. Yes. So yeah, that's it. Thank you so much And for watching. thank you for Subscribe. coming, Urjita. Subscribe to Spender Bender. That's it. Sal- Bye bye. follow Urjita. Okay, bye. Yeah, Bye, follow bye, me. bye, I'm prettier. Yeah, than yeah, this. yeah. Follow Yeah. her. Okay, bye. 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 Yes.